so much again for joining us in our live session. Rise and shine, everyone. So guys, before getting started with the topic today, let me share a little bit about FutureServe. So FutureServe is basically an international education advisory, and we are serving into three broad categories, that is the career counseling, the international exposure, and the skills development. Under the umbrella of career counseling, what we do is we help you find the suitable discipline in which you would love to pursue your higher education from abroad. And when it comes to the term abroad, it means that we are dealing into some different countries. That could be the United Kingdoms, the United States of America, Germany, Australia, and so much more. All what you need to do is to know further about FutureServe, you have to walk into the office. So furthermore, career counseling, we are going to tell you that which university is the best suitable university for you, and under this particular thing we are also going to give you the fee structure, the insights, okay? So that could be the fee structure, the eligibility criteria, and which English language proficiency test is the best fit for you. We are also going to guide you through the application processes, the documentation, and the visa procedures as well. Under the umbrella of international exposure, mind it, the international exposure is one of the most important factors that you guys should know before going abroad. So we are going to give you the pre and the post departure tips, the cultural and the traditional tips of the country you're going to live a little longer. We are also going to share the living standard and the lifestyle of the people you are going to spend your life with for a little longer. Under the umbrella of skills development, FutureServe Overseas Education Services is going to help you find the best profession for you. We are actually working on the different professions that are very important for you people, and that could be helpful for you guys when you are going to mingle with the job market of that place. So this is it a little bit about FutureServe, and now getting back to the topic. So today we are going to talk about verb. Mr. Amarves is going to tell us the importance of verb, the types, or anything that is relating to verb. So sir, over to you. Okay, in the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, it's Monday again. We've got only last week until the Ramadan finishes, so I'm just praying that may Almighty Allah finish and remove all of our sins and what we did in the past days. And may Almighty Allah give us a happy life. And advance Eid Mubarak to all of my viewers, because we are having only 1 week for the Eid, right? So today we are going to discuss about the verb, and verb is something like very easy topic. This is a topic like which is known by every single person or student. Even a person who is not related to the English communication, he can easily speak about the verb. So what basically is, it is the action of a human, of a thing, or of a noun. Now if I talk about the verbs, what is verb? People say that the verbs are the actions which are done by a person, which I completely say, okay, that is completely correct. But we have some kinds and we have some classifications of the verbs, but every single person needs to understand. For example, we've got the forms of verbs, the first form, second form, third form, fourth form, and fifth form. So when we talk about the fourth and fifth form, no one knows. Sure. But when we talk about the three forms of verbs, every single student knows that, okay, we've got three forms of verbs. Cut, 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 speak, spoke, spoken, drive, drove, driven, swim, swam, swum. So what I say, the students are actually completing and they really know about the forms of the verbs. So they cannot differentiate between the kinds, and they literally face problems when they come towards the kinds and classifications of the verb. So where basically is a kind of sentence, it's a kind of verb, which is what known as the backbone of a sentence. Without verb, a sentence is nothing. Like when I talk about the verb, so it is the action which talks and shows about the actions which a subject performs. So what is subject? A word which comes in the start of the sentence, or like a do-word of an action. So if you are doing an action, it means what am I doing right now? I'm sitting on a chair and I'm speaking about the verbs today in the live session. So that is all about the things what I am actually doing here right now. So if a person is doing multiple tasks on one time, that is also known as verb. Now when you talk about me, so I'm speaking as well, I'm listening to you as well, I'm breathing as well, I'm thinking of the kinds of verb as well, I'm sitting as well, I'm speaking as well, I'm using my stamina and my power as well, so I'm utilizing this room as well, right? So
all of these forms of verbs are are happening simultaneously. Yeah. That is the case that verbs are given with the priority, and every single sentence really needs to have that verb, because if a sentence does not have a verb, it will not be considered as a sentence. It will be considered just a blunder, you know. Because why? Because the sentence will not be completed. It will be considered as phrase or clause or something. But when you talk about, when still you talk about the phrase, in phrase you do not have a verb, like you say in the room, on the wall, inside the city. So you talk about the phrase, you know, you do not have a verb in a sentence. That is the reason it is what known as phrase of a sentence. Yeah. Now when you talk about the clause of a sentence, you've got clauses. For example, when I came to the class, this is a dependent clause, right? So Yeah. you say when I came to the class, when I came to the class. Yeah. So came is the second form of verb. Yeah. So when I remove came from that verb, it will be nothing. When Yeah. I to the class. Yeah. When I to the class, it is Yeah. nothing. It does not make any that sense. Yeah. sense. It Yeah. does not give the complete and correct meaning Yeah. of the grammatical structure. that. So Yeah. that is the reason that verb is considered as the backbone of a sentence. That if a sentence does not have a verb, it will not be considered as a question. It will not be considered as a sentence. Yeah. Same is the case with the positive sentences, the affirmative, the declarative, the assertive, the positive, the negative, the interrogative, the exclamatory, the imperative, the optative. All of the kinds of sentences do require the verbs in order to present the opinion in the form of the sentence what a person is actually doing in the middle of the conversation. So like if I talk about myself, I say, oh, I an apple. So what am I doing with the apple? Am I drawing an apple? Am I cutting the apple? Am I baking cooking the apple? Am I converting it out of juice? Am I slicing it? Am I peeling it? I do not know anything about it because I have not put that form of verb in that sentence. You know what I mean? Yeah, So yeah. that is the case that you actually talk about the verb, the form of verb. Then it gives you that message, and then you can easily understand the real form of the verbs. So without wasting any precious time, I would simply say that the verbs literally are the backbones of a sentence, and that it really gives that what do you guys call it, a helping hand to the sentence to get completed. So this is the verb, and this is the simple and easy definition what I gave to you. And if there's anything else, you can ask about the words in it. Do we have any rules? No, we do not. Yes, we have. Yeah. Okay. Everything has a rule. Yeah. Every single thing has a rule. So when you talk about the rules, you should come towards the tenses. You should look at the auxiliary verbs, as well as the forms of verb. Why? Because when you use the sentences, when you use the verb, when you use the what do you guys call it, the tenses, you convert the sentence according to the forms of verbs. Like if I talk about simple past tense, so in simple past tense, I'm using verbs second form. Yeah. समझ आ रही है मैडम? Yeah. What am I using? I'm using verbs Second form of verb. second form. Yeah. So when I verbs second form of verb, what happens that it directly relates to the past tense. Like the students, or that is why directed to learn about the forms of the tenses, because they will understand the forms of the verbs. Now if I'm using verbs third form in simple past tense, it means I'm actually diminishing the real meaning of the English communication. It means, like, for example, if I say that I spoken to my father. Yeah. Wait, I spoken. No. ये क्या चीज हो गई? ये तो टोटली गलत हो गया ना. Yeah. तो जिस तरह से आप एक सेंटेंस लिखते हैं उसको उस तरह से आपने बयान भी करना होता है आखिर में. तो आपने किस तरह लिखना है? I spoke to the father. I spoke to the principal. वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, बिल्कुल ये आ गई। चीज है मैडम कि आपने उसमें क्या करना है, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को पुट करना होता है बीच में. तो अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को उसमें आप पुट नहीं करते तो क्या हो जाता है कि आपका एक्चुअली जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है वो डिमिनिश हो, उसकी मीनिंग जो है ना वो डिमिनिश हो जाती है. इसीलिए जो है जनाब, आप क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के रूल्स को सीखना होता है. जी हाँ. ठीक. अगर रूल्स आपने नहीं सीखे, इट मीन्स कि आप आई स्पोकन द ट्रूथ कह दोगे. हाँ, sure. तो आपने फिर कहना होगा आई स्पोक द ट्रूथ, सिंपल पास्ट टेंस. आई हैड स्पोकन द ट्रूथ, पास्ट परफेक्ट टेंस. आई वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई स्पीक द ट्रूथ, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब.
Present perfect tense, I have spoken the truth, verb's third form. Present perfect continuous tense, I have been speaking the truth for past 2 minutes. Right? So what is speaking? Again, ing form of verb. Simple future tense, I will speak the truth, verb's first form. Future continuous tense, I will be speaking the truth, ing form of verb is there. Future perfect tense, I will have spoken the truth, verb's third form is again in there. And future perfect continuous tense, I will have been speaking the truth for 2 minutes tomorrow. So like what? You are actually trying to speak and understand about the proper rules that you are actually speaking, and you're presenting your opinions, your ideas, your imaginations, your thoughts. You're like the way you're speaking, like the way you're generating the ideas, and the way you are giving that answer to the students out of the screen. That is the case that verbs is considered as the backbone of a sentence. Like in spite of that, we have got adjective, we have got adverb, we have got preposition, we have got conjunction, we have got interjection, we have got pronoun, we have got noun. But the verb is what known as the backbone of a sentence, because without verb, a sentence is nothing. इसीलिए जो है वर्ब के ऊपर फोकस किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल अगर वर्ब के ऊपर हमने फोकस ना किया तो क्या हो जाएगा? आप अपने सेंटेंस को सही अमली शक्ल नहीं दे पाओगे. अगर अब मैं ढीठ उर्दू में अगर बात करूं, क्या है कि आप उसको अमली शक्ल नहीं दे पाओगे. जब आप एक सेंटेंस को अमली शक्ल नहीं दे पाते, वो आपकी नेग्लिजेंस है. इसीलिए आपने वर्ब की काइंड्स को समझना होता है. So what do you think is the best source to practice these things? याद करें, मेमोराइज करें और यूज करें अपने कम्युनिकेशन में. There are 45,000 verbs in English communication. Don't tell me. Yes, 45,000 single forms of verb. तो 45,000 divided by 4 करें, multiplied by 4. कितने आते हैं? 1,20,000 से भी ज्यादा आते हैं. Don't tell me. हाँ जी. 4 4 16 1,60,000 से भी ज्यादा आते हैं. 1,80,000 समथिंग आते हैं. You want to नहीं तो वो सारे तो नहीं हम लोग मेमोराइज कर सकते. वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी याद नहीं कर सकते. आप 1,80,000 में अगर आप 180 याद कर लो, बस आपकी कम्युनिकेशन काफी हो जाएगी. और बाकी चीजें ऐसी हैं जो हमें आती भी हैं, सीखने की जरूरत ही नहीं. तो ये मिलेंगे कहाँ से? ये जनरल डिस्कशन में आपको मिलते हैं ना. आप अगर फॉर एग्जांपल वर्ब्स को स्टडी करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लो. ठीक है, या पेड वर्जन में आप अमेजोन से मंगवा लो या अलीबाबा से मंगा लो. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अलीबाबा से भी मंगाता है तो उसको भी सुटेबल प्राइस में मिल जाएगा. उसको ऑनलाइन पोर्टल से लिंक मिल जाएगा, उधर डाउनलोड कर ले, बस बात खत्म. ठीक है, सही, जबरदस्त. तो मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि अगर आपको अलीबाबा या अमेजोन पर नहीं जाना तो आप डायरेक्ट हमारे बाबे के पास आ सकते हैं, अमन ओवैस के पास आ सकते हैं. मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे सकता हूँ. हाँ बिल्कुल, मैंने परचेज किया था अलीबाबा वालों से. तो आप लोग आ सकते हैं, एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, यू कैन गेट द वर्ब्स, और फिर सर के साथ आप बैठ के उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. आप सर से उसके बारे में गाइडलाइन और हेल्प भी ले सकते हैं. और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें मैं जिस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ दैट इज़ दी प्रैक्टिस. बिकॉज अगेन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. और आपको अगर इंग्लिश ग्रामर को पूरे तरीके से सीखना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट. सही सर? एग्जैक्टली ऐसे ही है. अब अगर आप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है ना कि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग. या दैट्स फॉर श्योर. विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग. या इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रामर. यानी अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की तो व्हाट इज प्रैक्टिस? इट मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो इसी तरह जो है आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करना है. या इसके अंदर दूसरी चीज है मेरे पास, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. Oh. It's kind of verb. Yeah. Auxiliary verb है, transitive और intransitive verb. I mean, I think we have discussed these things in our. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज टॉपिक वर्ब का है तो दोबारा कर लें, स्पीक कर लेते हैं. देखें, वर्ब एक होता है वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब. वर्ब जो होता है ना जनाब, वो एक्शन इटसेल्फ है. या ठीक है, अंडरस्टूड. वर्ब जो होता है वो एक्शन इटसेल्फ है. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वर्ब जो होता है वो एक्शन इटसेल्फ है. और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वर्ब को मदद करने वाला होता है, यानी वर्ब का असिस्टेंट होता है. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब की मदद करता है एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में. नहीं आई समझ? समझ गई. तो वर्ब क्या चीज है? एक्शन इटसेल्फ. एंड वर्ब एडवर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. एंड हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसका असिस्टेंट होता है. उसका हेल्पर होता है. ठीक है. इसीलिए जो है जनाब, जब आप एक सेंटेंस को लिखते हैं,
90% ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस हेल्पिंग वर्ब का काम है जी। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको एक ओवरलुक देता हूँ अच्छा। हेल्पिंग वर्ब जो है मैडम हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब बहुत हैं 23 हैं ये जो है क्या करते हैं फॉर्म ऑफ सेंटेंस को वो करते हैं अपना शो करते हैं प्रमोट करते हैं फॉर्म ऑफ सेंटेंस को अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस आपके सामने यूज करता हूँ बड़े मजे का मैं आपको कहता हूँ कि यार मिस्टर अमर ओवैस प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू मिस वर्दा विच इज इम्पॉसिबल थैंक यू। ठीक है इस सेंटेंस के अंदर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म को पुट किया वर्ब की सेकंड फॉर्म को पुट किया और मैंने सिंपल पास्ट टेंस के अंदर एक सेंटेंस बनाया ठीक है मिस्टर अमर ओवैस प्रेजेंटेड यानी प्रेजेंटेड बीच में आ गया तो वो क्या हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई स्टूडेंट्स को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद समझ जाए इंशाल्लाह मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको एक गिफ्ट देना चाह रहा हूँ और मैंने कहा आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू मिस वर्दा मैंने मिस वर्दा को क्या किया एक गिफ्ट दिया इट इज सिंपल पास्ट टेंस अब इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर तो फिर क्या होगा दैट सर अमर ओवैस डिड नॉट गिव अ गिफ्ट टू मिस वर्दा अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए इसके अंदर मैंने डिड डाला है वेरी बैड सेंटेंस का एक जुमला बना रहा हूं ना अब फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस अगर अगर एक सेंटेंस के अंदर डिड आ गया तो उस डिड के थ्रू आप क्या करेंगे एक नेगेटिव सेंटेंस को मैंने डिफाइन कर दिया उसमें दैट मिस वर्दा ने सरवैस से गिफ्ट नहीं लिया यानी मिस वर्दा को सरवैस ने गिफ्ट नहीं दिया सो आई कैन से सर अमर ओवैस डिड नॉट गिव द गिफ्ट टू मिस वर्दा इसमें डिड आ गया ऑक्सिलरी वर्ब अच्छा गॉट इट इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड आ गया डिड अवैस गिव अ गिफ्ट टू मिस वर्दा तो डिड मेरे पास क्या 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 चीज है ऑक्सिलरी वर्ब है यही रीजन है कि ऑक्सिलरी वर्ब को जनाब इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब को सोचना समझना उसको सही तरह से उसको अंदाज़े बयां में परोकर अपने अल्फाज में उसको अमली शक्ल देना ये एक रियल इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक सही अंदाज़े बयां को जो डिफाइन करता है ये उसका एक 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 एक, एक ओवरलुक है तो इसीलिए जनाब क्या होता है कि अब ऑक्सिलरी वर्ब की जिस टाइम पे आप बात करते हैं ना उस टाइम पे आपने फोकस करना होता है कि जो 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये आखिर क्यों बनाए गए हैं और इनका क्या काम होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर यानी जब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को उठाते हैं उसके अंदर अगर आप बात करते हैं 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स की तो क्या होता है इज एम आर डू डज डिड हैज हैव हैड वाज वर विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट बी बीइंग यानी ये जो 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स है मैडम इन 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर क्या होता है आपका 90% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कवर हो जाता है बिल्कुल आई एग्री ठीक है ना अब इज एम आर का अपना काम है डू डज डिड का अपना काम है हैज हैव हैड का अपना काम है कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट का अलग काम है बी बीन बीइंग का अलग काम है इसमें कुछ सेमी ऑक्सिलरीज हैं कुछ फंक्शनल ऑक्सिलरीज हैं कुछ बेस ऑक्सिलरीज हैं कुछ बेसिक ऑक्सिलरीज हैं यानी आपने उन तमाम चीज़ को एक मुंजमद शुदा अफकार में परोकर आपने जो है क्या करना है उनको अपने अपने अंदाज़े बयां में उनको अमली शक्ल आपने देनी है ठीक है इसीलिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब की इंपॉर्टेंस का और उनके यूजेज का पता होना चाहिए हर हाल में और अगर इनकेस अगर आपको पता ना हुआ तो आप अपनी कम्युनिकेशन का बेड़ा गर्क कर दोगे ट्रू दैट सेम इज द एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि आई वाज गो टू स्कूल ये क्या चीज हो गई अगर मैं कहूँ आई वाज गो टू स्कूल अगर गो की बजाय गो के साथ मैं 3 वर्ड लगा दूं आईएनजी आई वाज गोइंग टू स्कूल के बाद भी ठीक है फिर बन जाता है कुछ तरीके का लेकिन 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 अगर नहीं हुआ तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेड़ा गर्क यही मसला है मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो स्पीक करना चाहते हैं इंग्लिश लेकिन वो उनको इन चीज़ों में आके मसले मसाइल का शिकार होते हैं यही रीज़न है दिस इज द रीज़न दैट द स्टूडेंट्स कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड द रियल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड they cannot differentiate between if the verb is there if the form is there if the sentences are there if the lexical resources are there they do not even understand they do not understand the form and they definitely face problems in their communication so I think this is enough for today अच्छा I've already discussed एक मैं आपको सेंटेंस देती हूँ आप उसकी ट्रांसलेशन करें जी जी ठीक है मिस्टर अमर अवैस मिस वर्दा को गिफ्ट देंगे
will give na simple future tense है ना हाँ देंगे Mr. Amar Awais will not give मैं negative sentence बना नहीं देता हूँ Mr. Amar Awais will not give no a gift that's a to cheating Miss Varda सारे सुन रहे हैं मिस्टर अमर जी अवैस चीटिंग कर रहे हैं अब मैंने उनसे सेंटेंस पूछा था मिस्टर मिस अमर वर्दा अवैस हमारी मिस बड़ी वर्दा कंजूस को है गिफ्ट देंगे यस यू आर गोइंग टू गिव मी गिफ्ट नाउ ओके गाइस सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है एंड एक चीज़ अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी टू प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स अदरवाइज ये आपके लिए यूजलेस होंगी आप ये सेशन सुनेंगे भी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. If you have any queries, if you need more details, and if you're stuck going abroad, you can always step into FutureServe Overseas Education Services. We are available for you people from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. You can also visit our website, that is www.fsoes.com. I recommend you people to visit our Facebook page regularly so you'll never miss a chance to attend our live session. So this is it for today. Thank